Students, so I think previous classes complete the example number 12 and same as you discussed example number 13. So now start example number 14. Example number 14. Example number 14 is so that every polynomial function is continuous. So that every polynomial function is continuous. Polynomial function इसको हम एज ए थ्योरम यूज करेंगे. आगे चल करके एग्जाम्पल लगाएंगे. एक्सरसाइज यूज एज ए थ्योरम. एवरी polynomial function is continuous. So let any polynomial function. So let p of x is equal to, suppose general polynomial, p of x is equal to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 n power n minus 2 plus so on an. This is a polynomial of degree n where a naught is equal to 0. Then so that every polynomial is continuous. Point is not mentioned. So that it is continuous at every point of domain of this function. So first suppose let C be any point of domain to this function. And what is the domain of this function? Domain is set of real number. What is the domain? Set of real number. All the real numbers satisfied. That is defined. So your domain is set of real number. So let C be any point in the domain. Let C be any point in the domain. So for continuity, find the limit value. First find limit value. So limit x tending to c p of x is equal to limit x tending to c, put value p of x. What is p of x? A naught x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x power n minus 2, so on an. This is the value of p of x. Now put x is equal to c. Put x is equal to c. So a naught c to the power n, a1 c to the power n minus 1 plus a2 c to the power n minus 2, so on n. This is the limit value. Now find point function value. Point function, that is p of c. So since p of x equal to this, so find p of c, that is put c in place of x. So a naught c to the power n, a1 c to the power n minus 1, a2 c to the power n minus 2 plus so on an. So same as limit value. So therefore limit x tending to c p of x is equal to p of c. Both are equal. So therefore p of x is continuous at everywhere, that is every point of domain of the definition. So हम लोग इसको यूज करेंगे एज ए theorem. Every polynomial function is a continuous function. Now example number 15. Read the question. Example number 15. Example number 15. Example number 15. 15 is find all point of discontinuity of the greatest integer function defined by f of
x is equal to greatest integer of x. Find all point of discontinuity, and this denote the greatest integer which is less than or equal to 1. So find point of discontinuity. Suppose what is value c? C any real number not equal to any integer. Suppose here what is the domain of this function? What is the domain? F of x is equal to greatest integer function of x. Its domain is set of real number, because f of x defined for all real value of x. So here domain is R. So let c be any real number. Let c be any point in domain. So case 1, suppose c is not an integer. That number c either integer or not integer. So suppose c be in not integer. Case 1, suppose if c is not an इंटीजर, वह इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, डेसिमल वैल्यू हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगा, दैट इज 1 2 3 4 -1 -2 -3 इस टाइप का वैल्यू नहीं होगा. सी एनी रियल वैल्यू है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट वैल्यू. सो लिमिट x टेंड इनटू c f of x is equal to limit x tend into c, the value of f of x is greatest integer function of x, and x tend into c, that is x is a decimal value not integral value. Suppose c is equal to 5.9, c is equal to 5.9. Then what is the value of this? This is equal to 5. That is integral value. This is an integer. So put x is equal to c. So greatest integer of c. You see the limit value. Now find point function value. So f of c is equal to also greatest integer of c. So both are equal. So therefore limit x tend into c, f of x is equal to f of c. Therefore f of x is continuous at every non-integral point. Non-integral point. Non-integral point पे फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस. केस 2, सपोज c इज एन इंटीजर. केस 2 सपोज कर रहे हैं. सपोज c इज एन इंटीजर. Let c belongs to I that is integer. Check that integral point function continuous or not. Since integral point is the turning point of greatest integer function, आप समझ लोगे. सपोज greatest integer of 5 plus means 5 plus some positive real value. So this value is 5, and greatest integer of 5 minus is 5 minus some positive real value. So this value is 4, that is 5 minus 1. Similarly, greatest integer function c plus, that is greater than c. So this value is c, but greatest integer function of c minus is equal to c minus 1. So
integral point is the turning point of greatest integer function. Turning point. So now find, जब turning point होंगे तो चेक करना होगा left limit and right limit. So find LHL. So find LHL. So this equal to limit x tend into c minus f of x. LHL c minus. क्यों find कर रहे हो LHL? Because integral value c is an turning point of greatest integer function. टर्निंग पॉइंट पे यदि कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो उसमें से LHL और RHL फाइंड करेंगे, बिकॉज C प्लस पे वैल्यू और C माइनस पे वैल्यू दोनों डिफरेंट होती है, तो इस केस में LHL RHL निकालना होगा. सो व्हेन x टेंड्स टू C माइनस, पुट द फंक्शन वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू C माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. नाउ सिंस x टेंड इनटू C minus, then what is the greatest integer function value of x? When c minus, then function value is c minus 1. That is limit x tends to, in that case the value of x is c minus h, where h is some positive real value. So here put x is equal to c minus h, where h tend into 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या है c माइनस, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे c माइनस h, वेयर h टेंड इंटू 0 पुट कर दें वैल्यू इसमें. सो दिस इक्वल टू लिमिट, अब x के प्लेस पे पुट करोगे c माइनस h, तो h टेंड इंटू क्या हो जाएगा 0. सो टेकिंग लिमिट h टेंड इंटू 0 बिग ब्रैकेट x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे c माइनस h. एंड c इज एन इंटीजर. c में से क्या कर रहे हो, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू माइनस कर रहे हैं. सपोज c इज इक्वल टू 5 एंड h सपोज कर लिए 0.000001, तो 5 में से स्मॉल नंबर माइनस कर रहे हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4.9999 समथिंग होंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4. दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, द वैल्यू ऑफ दिस इज c माइनस 1, बिकॉज यहाँ पे c से वैल्यू क्या है थोड़ा सा लेस, तो फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएंगे c माइनस 1. नाउ पुट h इज इक्वल टू 0, नो वैल्यू ऑफ h, सो दिस इक्वल टू c माइनस 1. सो दिस इज द LHL. नाउ फाइंड द RHL वैल्यू. सो RHL लिमिट x टेंड इंटू c प्लस f of x. RHL c प्लस, पुट फंक्शन वैल्यू, x टेंड्स टू c प्लस f of x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. नाउ पुट x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू c प्लस h, वेयर h टेंड्स टू 0, बिकॉज x टेंड इंटू c प्लस, that is the value of x is just greater than c. So we suppose x is equal to c plus h. So this equal to limit h tends to 0 और x के वैल्यू क्या पुट करेंगे c. यहाँ पे अब लिमिट चेंज होगा, चूँकि यहाँ पे x वैल्यू है तब लिमिट x टेंड्स टू c प्लस. अब आप x को पुट कर रहे हो c प्लस h, तो फंक्शन h के फॉर्म में आ गया, तो वे लिमिट h टेंड्स टू क्या है 0. So we can write limit h tend into 0. This equal to limit h tend into 0 and the value of c plus h, the value of c plus h, where c is an integer, so c plus h, that is suppose c is equal to 5, then 5 plus some positive real value, 5 plus positive real value, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 प्लस वैल्यू 5. सो c प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगा c. ना पुट h इज इक्वल टू 0, नो हियर h, सो इज इक्वल टू c. सो व्हाट इज द लेफ्ट लिमिट c माइनस 1 एंड राइट लिमिट c. सो देयरफॉर LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, बिकॉज LHL c माइनस 1 एंड RHL c. सो f of x is not continuous at any
integral point. So what is the question? Question is example, which example? Example number 15. Find all point of discontinuity, that is find all those points such that function is not continuous. So which point function not continuous? At any integral point. Therefore set of integers is a integers be point of discontinuity. Set of integers be point of discontinuity, that is point of discontinuity is all, that is set of integers. Okay, so next algebra of continuous function. Algebra of continuous function. Algebra means taking sign plus minus into division, यही होता है algebra. So algebra of continuous function. So now write theorem. Now theorem number 1. Theorem number 1. Theorem 1 is, suppose f and g be two real function continuous at a real number c, and f and g given continuous at c. Given f and g are continuous at x is equal to c, then क्या शो करनी है? Then so that point first f plus g is continuous at x is equal to c. Second, f minus g is continuous, same x equal to c. Third, f into g is continuous at x equal to c. And fourth, f by g is continuous at x equal to c, provided g of x not is equal to 0, that is g of c not is equal to 0. g of c जो denominator value 0 नहीं होना चाहिए. If denominator value is 0, then function is not defined. So this is a theorem. So what is given? Here given f and g are two continuous function at c, then so that their sum is also continuous. Proof. Since क्या given है? Since f and g are continuous at x is equal to c, it is given. So function continuous means limit value is equal to point function value. So therefore limit x tending to c f of x is equal to f of c, and limit x tending to c g of x is equal to g of c. Now so that their sum is also continuous. Sum continuous क्या करना होगा? इस sum का निकालना होगा limit point and point function value. If both are equal, then function continuous. So find limit value. Now limit x tending to c f plus g at x, इस फंक्शन का हम निकाल रहे हैं लिमिट वैल्यू. लिमिट x tending to c f plus g at x. So this equal to limit x tends to c, this can written f of x plus g of x. यह x दोनों ही फंक्शन पे ऑपरेट होगा, f of x plus g of x. Then use algebra of limit, क्लास 11th में पढ़ें. So this can written limit x tending to c f of x
plus limit x tending to c g of x using algebra of limit. And since x tends to c, f of x, the value is f of c. So put value f of c, and limit x tends to c of g of x value g of c. G of c, both equations suppose first, so by either first. And this f of c plus g of c, this can also written f plus g at c. So limit x tending to c, f of x or f plus g at x is equal to point function value. This is a point function value. Therefore f plus g is continuous at x is equal to c. ये समझ में आ गया, क्योंकि लिमिट वैल्यू इक्वल टू क्या आ गया, पॉइंट फंक्शन वैल्यू. सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस. आप सिमिलरली इससे डिफरेंस दिखा लोगे, जहाँ जहाँ केवल हम प्लस किए वहाँ साइन क्या हो जाएगा, माइनस. सेम आ जाएंगे वैल्यू, कंटिन्यूअस. सेम एज इनटू आल्सो कंटिन्यूअस. एंड सिमिलरली ए बाई जी आल्सो कंटिन्यूअस. ए बाई जी सब जगह डिवाइड हो जाएंगे, ये एफ ऑफ सी बाई जी ऑफ सी आ जाएंगे. तो सेम चारों प्रूफ हो जाएगा. और तो आप ये थ्योरम प्रूव हो गया. अब आप एक्सरसाइज 5.1 आप शायद कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे. आई थिंक 1 to 5 होमवर्क था. नाउ होमवर्क इज 6 to 12. So exercise 5.1. Exercise 5.1 homework is question number 6 to 12. This is the homework. आप इसको ट्राई करोगे, सीरियसली ट्राई करना है, एंड आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास. ओके.